हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज का ज्वाइन किया है तो महाराज को कोच बनाए और जो नवनीत प्रभु जी जो ट्रांसलेट करेंगे उनको प्रभु जी फिर से एक बार बोलिए। महाराज को हमने ये कोच बनाए। हाँ नवनीत दास उनको भी कोच बनाए। हाँ करिए। ओके तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So as we are very much fortunate to have His Holiness Bhakti Vignavinas Narasimha Maharaj. He is the very senior disciple of His Divine Grace Srila Prabhupada, and Maharaj is preaching all over the world, and also he is the ISKCON initiating Guru. And Maharaj came to Abu Dhabi and Dubai also in 2 times. And whoever is doing the Navadvip Mandal Parikrama every year, so Maharaj always is in the Navadvip Mandal Parikrama and giving the association to the devotees and give the class. So at present, Maharaj is also in Mayapur. He is staying in Mayapur Institute and serving there and Bhakti Shastra courses and different Shastric courses. And Maharaj very lovingly and give the mercy to everyone. So we are very, very fortunate. So I'll just try to recite one slok to welcome Maharaj in this Srimad Bhagavatam, Canto 3, 5th chapter and verse number 3, when Vidura talks with Maitra Muni. So saying, Janasa Krishna Vimukha Sadaivat Adharmasila Sudhukasa Anupraya Charantinunam Bhutani Bhavani Janartanasa. O my Lord, clean philanthropic soul travel on the earth on behalf of the Supreme Lord. Show compassion to the fallen souls who are averse to the sense of subordination to the Lord. So similarly, Maharaj is the personified of this verse. Maharaj travels all over the world in this earth on behalf of Lord Krishna and giving a special mercy to the fallen conditioned soul like us, and he delivered to the fallen conditioned souls from this material world. So we will welcome Maharaj by lovingly 3 times Hare Krishna Mahamantra. Please chant along with me 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, and His Grace Navanitya Prabhu is from ISKCON Temple, Faridabad. He is also very nice devotee and teaching. So he will translate today from English to Hindi with Maharaj. Okay. So we will welcome to Navanitya Prabhu also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Other devotees, mute yourself attentively here. प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय कृष्ण प्रभु जी। Okay, Hare Krishna. Can you hear me okay? आप सब महाराज जी को सुन पा रहे हैं? Yes? All right. Yes, Navanitya Prabhu, you are also hearing? Yes. मैं सुन पा रहा हूँ महाराज जी को। I am able to hear. Okay. महाराज। Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desha Tarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So very fortunate to have the opportunity to address all of you this evening. Of course, sometimes I do come there. I've been coming there. When I come to the Middle East, I do come to visit there. Devotees are from, maximum devotees are from India and few devotees from Middle East. Oh, okay. Yes. And Maharaj, Navneet Prabhu will translate line by line. Okay. Okay. All right. I thought we were just addressing the Abu Dhabi people tonight. Okay. So there's a mixture here. All right. So I wanted to speak tonight about initiation in the ISKCON society in the very unique form which it takes. तो महाराज जी आज दीक्षा के बारे में बताएंगे जो कि इस्कॉन सोसाइटी में काफी वो है अलग तरीके से होता है. You know, when we think of Diksha, we think of taking initiation and we become practically the property of the Guru. जब हम दीक्षा के बारे में सोचते हैं और दीक्षा लेते हैं तो हम गुरु की संपत्ति हो जाते हैं. But in our ISKCON society, it's a little different. That we take initiation not just to the Guru, but to the society. But ISKCON में ये थोड़ा अलग तरीके से होता है. हम यहाँ पे जो दीक्षा लेते हैं वो हम गुरु से तो लेते हैं but हम सोसाइटी को भी समर्पित होते हैं. We did have the problem in the past, actually. It happened that devotees were not familiar with this, and they were thinking that by taking initiation, they were the property of their guru. तो हमने जो है पहले थोड़ा सा इसमें हमने कुछ मुश्किलों का सामना आया हमें. तब भक्तों ने गुरु से दीक्षा ली तो उन्हें लगा कि हम गुरु की संपत्ति है, बट वो ISKCON सोसाइटी ISKCON समाज के बारे में कुछ नहीं जानते थे. And we had the unfortunate events that happened that some of the spiritual teachers got spiritual difficulties, and even they ended up leaving ISKCON. तो ऐसा हुआ कि कुछ जो है आध्यात्मिक गुरुओं को कुछ दिक्कत आई उनके आध्यात्मिक जीवन में और वो इस ISKCON समाज को छोड़ के चले गए. And there was some cases where when the guru left, the disciples followed their guru because they thought, I'm the disciple, he's my guru, I have to go with him. If my guru leaves, I should also leave. तो जब गुरु जो है हमारे जो है छोड़ के चले जाते हैं ISKCON सोसाइटी ISKCON समाज को, तो उनके जो दीक्षित भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि हमें गुरु के साथ जाना चाहिए और वो भी ISKCON समाज को छोड़ देते हैं. And so it happened that, of course, once they left ISKCON, it wasn't long before their spiritual life was completely finished, and they just became materialistic, ordinary conditioned souls again. तो जब भी देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु ISKCON को छोड़ के जाता है तो कुछ नहीं दिनों में उसका जो आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है और वो एक साधारण कर्मी बन जाता है. So we want to understand what actually happens in ISKCON. The understanding is Srila Prabhupada is the prominent guru. तो हम आज समझेंगे कि हमारी ISKCON को लेके क्या समझ होनी चाहिए. श्रीला प्रभुपाद जो हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं. Srila Prabhupada is the founder Acharya, and he's the spiritual authority for all the members of ISKCON. जो
जो शीला प्रभुपाद जी हैं वो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और वो सभी की आध्यात्मिक गुरु हैं। In some ways, it's similar to what happens with the Sri Vaishnavas in the Ramanuja Sampradaya. That when people are initiated, they're connected to Ramanuja. तो ऐसा कुछ रामानुजा संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय में हुआ, जहाँ पे सब भक्तों ने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली और वो उनसे जुड़े हुए थे। Of course, Ramanujacharya, he was the prominent person in that Sri Vaishnava line, and since the time of Ramanujacharya, anyone taking initiation there in that line, they have a connection to Ramanujacharya. रामानुजाचार्य बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे श्री संप्रदाय के, और जब उनके समय में कोई भी दीक्षा लेता था तो वो उनसे जुड़ जाता था और उनसे ही दीक्षा लेता था। And similarly, in our ISKCON society, people taking initiation into ISKCON, they're all, when they're initiated, they're being connected to Srila Prabhupada and to all the previous acharyas. तो इसी प्रकार जब इस्कॉन में कोई दीक्षा लेता है तो वो श्रील प्रभुपाद से और हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्यों से जुड़ जाता है। So this is a very special system. It's very different, like other spiritual masters, other people maybe giving initiation. And when they give initiation, they consider that person to become like their property, their chila. तो बाकी के समाजों में क्या होता है कि जब भी कोई गुरु कहीं पे भी दीक्षा देते हैं तो वो चाहते हैं कि जो उनके जो भक्त हैं, जो उनके दीक्षित जो भक्त हैं, वो उनका चेला बन जाए, उनकी संपत्ति बन जाए। Srila Prabhupada, however, he writes in the Chaitanya Charitamrita that there are different kinds of spiritual masters. Particularly, there's the initiating spiritual master, and there's also the instructing spiritual master. तो श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरित्रामृत में ये लिखा है, वहाँ पे इस बात का वर्णन दिया है कि अलग तरह के आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, एक जो हमें दीक्षा देते हैं और एक हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। Before we take initiation, we first have to be very careful and take instruction. And we can take instruction from several people. और जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें उससे पहले हम काफी लोगों से हम शिक्षा लेते हैं जो कि हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। We should understand the qualification to be an initiating guru and the qualification to be an instructing guru are the same. There's no difference in their spiritual position. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गुरु हमें दीक्षा दे रहे हैं या जो शिक्षा दे रहे हैं तो उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। Therefore, it's recommended people coming into ISKCON, they should hear from different spiritual authorities. They shouldn't just think, oh, I only hear from this person. We want to encourage the devotees to hear from as many different spiritual authorities as possible. तो जब भी ISKCON में कोई भी भक्त आता है या जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं कि आप अलग-अलग जो हैं आध्यात्मिक गुरुओं से सुन सकते हैं। ये नहीं जरूरी कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति से सब कुछ सुन रहे हैं। So it's the standard policy within ISKCON. They welcome different sannyasis who are coming around. They welcome them to come and give presentations, give classes, even give seminars, and to meet the devotees in their temple. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आप कभी भी ISKCON के मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे अलग-अलग सन्यासी आते हैं अलग-अलग जगह से, और वो सब जो है आपको लेक्चर्स देते हैं, प्रवचन करते हैं, और आप उनके प्रवचन सुन सकते हैं। Srila Prabhupada explained that if we're too impulsive in selecting a spiritual master, that is not very wise. We want to be very careful.
तो हमें इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी इसको आध्यात्मिक गुरु को चुनने के लिए हमें बड़ा सावधानी पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु का चुनाव करना चाहिए. And Prabhupada gave the example. He said, just like you go in the market, you know, if you want to be careful about purchasing goods, especially if it's maybe like a night market or a street market. You know, some of the goods they may just simply be copies. They're not actually genuine products. तो श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो कई बार हम देखते हैं कि कोई हमारी जैसे लोकल लैंग्वेज में कहेंगे जैसे कोई मंगल बाजार या कुछ इस तरह के बाजार होते हैं, तो वहाँ पे जो काफी सामान होता है वो नकली भी हो सकता है. If you ever go to Hong Kong, I don't know about nowadays, but I know in the past in Hong Kong, they used to have people on the street and they used to come by and say, copy watch. And they invite you to come and get a copy watch. तो महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे अभी तो उनको नहीं मालूम, पर पहले हांगकांग में जो होता था, वहाँ पे गलियों में दुकानें होती थी सड़क पे, और वहाँ पे जो घड़ियाँ मिलती थी उनका नाम होता था कॉपी वॉच. So, you know, there's some big brand names like Rolex. It's a very expensive watch. And they can show you a watch which looks just like that Rolex watch, but it's not. It's just a copy. तो महाराज जी एक और उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पे जैसे आप जाएंगे और आप वहाँ पे कोई घड़ी खरीदेंगे, तो जैसे एक रोलेक्स कंपनी है जिसकी घड़ियाँ जो बहुत अच्छी होती हैं, बट वो बहुत ही महंगी होती हैं, बट वहाँ पे आपको एक वैसी घड़ी मिलेगी देखने में जो कि रोलेक्स जैसी है. Of course, within our ISKCON society, a lot of care is taken to make sure that there's a high standard among the different spiritual teachers. हम ISKCON समाज में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो अपना एक आध्यात्मिक वो बनाए रखें, पद बनाए रखें. Before one can be awarded sannyas, the renounced order of life, one should complete a study course which is quite extensive and quite demanding. किसी को भी ISKCON में संन्यास देने से पहले काफी सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, जो कि बड़े ही विस्तृत मात्रा में है और जो कि बहुत अधिक समय लेते हैं. And similarly, people taking on the position of spiritual teachers, because the spiritual teacher does not have to be a sannyasi, he can belong to any ashram, but still there must be a good recommendation, a strong recommendation from various different authorities. तो एक आध्यात्मिक शिक्षक जो होता है वो जरूरी नहीं कि वो सन्यासी हो, वो अलग आश्रम से हो सकता है, बट उसको भी काफी शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके लिए भी उसको काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस होनी चाहिए. So a lot of care is taken to ensure that the people who are giving initiation and the people who are coming and preaching, traveling, preaching, that they're genuine products, that they keep up the standards and they behave properly. तो इसलिए ISKCON में इस चीज का काफी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सन्यासी है और कोई भी जो सन्यासी जो अलग अलग जगहों पे जाके प्रवचन करते हैं, या कोई भी आपके जो आध्यात्मिक शिक्षक हैं, उनके लिए एक आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर जरूरी है जो कि ISKCON में ध्यान दिया जाता है. But still, every individual has a responsibility. It's his own responsibility to decide for himself who he wants to accept as a spiritual teacher. बट ये हर एक जो भक्त जो कि ISKCON में दीक्षा लेना चाहता है, ये उसकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु चुने और उनसे दीक्षा लेना चाहे. Nobody dictating. No, we don't say you have to take from him. This is the guru. You have to get initiation from. It's not like that in ISKCON. ISKCON में आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जाइए आप जाके इस
प्रति इस पर्टिकुलर इस व्यक्ति से, इस सन्यासी से दीक्षा लीजिए। आप अपने हिसाब से उसका चुनाव कर सकते हैं। At the present moment, there's more than 100 different people giving spiritual initiation, and they belong to all different ashrams. तो इस समय आपको ISKCON में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप एक व्यक्ति विशेष से दीक्षा लीजिए, और ISKCON में इस समय 100 से ज्यादा दीक्षा गुरु हैं जो कि अलग-अलग आश्रम में हैं। And the purpose of the initiation is to connect us more firmly to the disciplic succession which we come in contact with through His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. और ISKCON में दीक्षा लेने का जो मुख्य वो कारण ये है कि इससे क्या होगा कि हम जो हमारी गुरु परंपरा है उससे जुड़ जाएंगे, और वो गुरु परंपरा में हम किसके थ्रू जुड़ेंगे? श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। Now people coming into ISKCON, often they're eager to get a spiritual master. So the first person we want to introduce them to is His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो अगर जैसे ISKCON में भक्त आते हैं और वो दीक्षा लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें सबसे पहले किससे मिलवाते हैं? His Divine Grace, श्रीला प्रभुपाद जी से मिलवाते हैं। We encourage them to read Prabhupada's books and read the books also about Prabhupada, which have been written by some of his disciples, and get to know Srila Prabhupada by listening to his lectures and his kirtans. तो जो भी कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति ISKCON में आता है या जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है, हम उसे क्या करते हैं? हम उसे प्रेरित करते हैं कि आप श्रीला प्रभुपाद की किताबों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और श्रीला प्रभुपाद के बारे में पढ़िए, जो कि उनके काफी सारे शिष्य भक्त जो हैं उन्होंने लिखी हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, श्रीला प्रभुपाद जी के प्रवचनों को, उनके कीर्तनों को सुनिए। श्रीला प्रभुपाद जी को ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करिए। Where we have an established temple, we will also have the Vyasasan of Srila Prabhupada, with either a murti of Srila Prabhupada or a portrait of Prabhupada. तो जहाँ जहाँ पे भी ISKCON के मंदिर होते हैं, वहाँ श्रीला प्रभुपाद जी का विग्रह होता है, श्रीला प्रभुपाद जी की विग्रह और उनकी फोटोएं होती हैं। And every day we'll have regular puja to Srila Prabhupada, where the devotees will worship Prabhupada as the founder, Acharya, and we'll all have the opportunity to offer flowers to Prabhupada. और हर मंदिर में प्रत्येक दिन श्रीला प्रभुपाद जी की गुरु पूजा की जाती है, और वहाँ पे सभी भक्तों को और नए आने वाले लोगों को मौका मिलता है कि वो प्रभुपाद जी को पुष्प चढ़ा सके। So Srila Prabhupada is the founder Acharya, but Srila Prabhupada is not physically present. Therefore, Prabhupada cannot actually give us initiation. तो प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य हैं, पर श्रीला प्रभुपाद जी अभी इस भौतिक शरीर में नहीं हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी हम सब लोगों को आगे दीक्षा नहीं दे सकते। He can give us guidance, he can give us a lot of help, a lot of shelter, but he cannot actually give us the initiation. Initiation has to come from the living person. तो श्रीला प्रभुपाद जी हमें मदद कर सकते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी हमें सहायता कर सकते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी हमें शिक्षाएं दे सकते हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी हमें दीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि दीक्षा देने के लिए एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। So we take instruction first of all. After coming to ISKCON, we take instruction. We hear from the different devotees, the traveling preachers, the different teachers who are coming around. We come and listen to them, and we ask questions from them, inquiring from them. तो जब भी हम ISKCON में आते हैं तो हम प्रवचन सुनते हैं, हम जिनसे प्रवचन सुनते हैं, हम जो अलग अलग सन्यासी जो होते हैं उनसे प्रवचन सुनते हैं, अलग अलग जो वक्ता होते हैं उनसे सुनते हैं, मंदिर की अथॉरिटी या मंदिर के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनसे सुनते हैं, और हम उनसे प्रश्न करते हैं। It's expected that the people who are coming to hear the lectures, they will become attracted and they will develop a relationship with some of the spiritual teachers.
तो ये स्वाभाविक है कि जब भी कोई यहाँ पे इस्कॉन में आता है तो वो जो है अलग अलग वक्ताओं से प्रवचन सुनता है और किसी वक्ता के प्रवचन से वो ज्यादा प्रभावित होते हैं. And we should develop relationships with more than just one person. We hope you can develop some connections, some attractions and feelings for different spiritual teachers. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक व्यक्ति से आकर्षित होते हैं. तो कभी कभी होता है कि हमें एक से ज्यादा जो वक्ता है या सन्यासी हैं हमें उनके प्रवचन अच्छे लगते हैं और हम उनके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं या झुकाव रखते हैं. And I'm sure you know there's some very powerful charismatic preachers in the Krishna consciousness movement. And you may be fortunate, you may get to know them, you develop a relationship with them. तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी ISKCON सोसाइटी में बहुत ही प्रभावशाली जो है वक्ता हैं और काफी सारे संख्या में हैं. So they can become like instructing spiritual masters, and we can have several instructing spiritual masters. तो वो सब जो है हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं और वो एक से ज्यादा हो सकते हैं. काफी शिक्षा गुरु हो सकते हैं हमारे. But from all of these instructing spiritual masters, one person will become prominent, and that person should go on to become the Diksha, the initiating spiritual master. तो ऐसे काफी सारे हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, बट उनमें से कोई एक व्यक्ति विशेष हो सकता है और वो व्यक्ति आगे जाके हमारा दीक्षा गुरु बन सकते हैं. We only take initiation from one person. हम सिर्फ एक ही गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं. Now, after initiation, we can still continue to take instruction from many people. तो हम दीक्षा लेने के बाद भी हम काफी सारे शिक्षा गुरुओं से वो ले सकते हैं, आदेश ले सकते हैं, शिक्षाएं ले सकते हैं. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he describes that actually the person who is giving instruction, his position or his role is more important than just the role of the person who's giving initiation. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई भी गुरु जो कि आपको आदेश दे रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, वो उसको जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है कई बारी उनसे जिन्होंने आपको दीक्षा दी है. Sometimes it happens that the person who's giving initiation, he has many disciples and he cannot get to know all of them. He only knows a very few of them, and he cannot spend much time in the place where we are. Often he may be moving and traveling around, so we don't get a lot of opportunity to always be with the initiating spiritual teacher. तो कई बारी जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं उनके काफी सारे शिष्य होते हैं और हम जो होते हैं और वो जो है अलग अलग देशों में भ्रमण करते रहते हैं. तो ये हमारे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम उनका व्यक्तिगत संग मिल सके. It may be like that, it may not. You may be lucky. You may get initiation from a person and you may have the opportunity to have a lot of time with them and to be with them and even to travel with them or to personally serve him. तो हम कई बारी इसमें हमारी अगर अच्छा भाग्य रहता है तो कई बारी होता है कि हमें जिससे हम दीक्षा लेते हैं हम उनका जो है व्यक्तिगत संग मिल सकता है या हम उनके साथ किसी यात्रा पे जा सकते हैं. बट कई बारी ऐसा हो सकता है और कई बारी नहीं भी. It's up to every individual to decide for themselves exactly who they want to be their spiritual teacher and what kind of relationship they want to have. तो ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के अपने दीक्षा गुरु चाहते हैं और उनसे किस तरह का संबंध रखना चाहते हैं. We have to understand that the body of the spiritual teacher is not eternal. And after some time, the spiritual teacher he will leave his body. हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनका शरीर जो है वो नित्य नहीं है.
और थोड़े समय बाद उनको भी अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा. After he leaves the body, we don't take initiation again. We only take initiation one time. But we can take instruction. तो जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो हम दोबारा दीक्षा नहीं लेते, हम सिर्फ उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं. So the Diksha Guru leaves the world, we have to take shelter of another person who can guide us. तो इस उदाहरण में तो अगर शिक्षा गुरु जो है हमारे शरीर छोड़ चुके हैं तो हमें किसी ना किसी व्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है. At the same time, we can also be guided by the instructions and the lectures which were given by our own Diksha Guru. तो इस उदाहरण में बता रहे हैं महाराज जी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक व्यक्ति है और उसने से दीक्षा ली है और उसके गुरुजी का अब शरीर छोड़ चुके हैं, तो वो उनके जो है प्रवचन उनसे शिक्षा ले सकता है या वो जो है अपने किसी शिक्षा गुरु से भी शिक्षा ले सकते हैं. There's two ways to associate with the spiritual master. One is by the Vani and the other is by the Vapu. तो दो तरीके हैं अपने आध्यात्मिक गुरु का संग करने का, एक वापु और एक वाणी. Right? The Vani is eternal, but the Vapu, this physical presence, that's not eternal. तो जो वाणी है वो तो नित्य है, पर जो उनका जो फिजिकल जो उनका शरीर है वो नित्य नहीं है. Just like myself, I had the good fortune to get initiation from Srila Prabhupada. I met him in England in 1971. So, as a young devotee, I didn't have much association with Prabhupada. तो महाराज जी बता रहे हैं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि 1971 में मैं श्रीला प्रभुपाद जी से इंग्लैंड में मिला और मैंने उनसे दीक्षा ली. बट मैं उस समय जो था काफी जवान था, तो मुझे श्रीला प्रभुपाद जी का इतना व्यक्तिगत संग नहीं मिला. But we associated with Prabhupada by his Vani. Sometimes we were fortunate we could sit in his class with all the other devotees and hear his lectures, and other times we could listen to recordings, lecture tapes of Prabhupada. Other times we would read Prabhupada's books. महाराज जी बता रहे हैं कि मैंने तीन तरह से प्रभुपाद जी का संग किया. एक तो मैंने प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत वो तब इस पृथ्वी पर थे तो मैंने उनके लेक्चर सुने, और फिर मैंने बाद में उनके रिकॉर्डेड लेक्चर सुने और मैंने उनकी पुस्तकों से उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया. And after Srila Prabhupada departed from the world, of course, even while Prabhupada was present in the world, we were serving under some of the senior devotees. Like Prabhupada appointed different devotees into senior positions. And so we'd work under their direction. Maharaj, during Prabhupada, when he's on planet also, you are serving under devotees. Okay. तो महाराज जी बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी इस भूमि पर थे, पृथ्वी लोक पर थे, उस समय भी महाराज जी ने जो है प्रभुपाद जी के कई जो सीनियर जो बड़े जो हैं उनके जो डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं, उनके साथ प्रभुपाद जी को सर्व किया और इस मिशन को सर्व किया. You have to understand, I'd like you to understand that there is a hierarchy in ISKCON. There are very senior leaders, senior managers. तो यहाँ पे प्रभु महाराज जी बता रहे हैं कि ISKCON में जो है एक प्रभु जी हायरार्की को क्या कहेंगे हिंदी में? जय केशव प्रभु जी, हायरार्की को क्या कहेंगे? नीचे से ऊपर ऐसा जो है ऐसा. तो हायरार्की है एक ISKCON में जिसमें हमारे काफी सारे वरिष्ठ सन्यासी हैं और वरिष्ठ जो हैं वो है अपने लीडर्स हैं. Recently I had a complaint from one lady. She said, I thought you were all equal. I didn't know you had a hierarchy in ISKCON. तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभी उनको एक जो है एक माता जी ने कंप्लेंट करी कि उनको नहीं पता था कि ISKCON में सबके सब बराबर नहीं है.
उनको लगा था कि ISKCON में सबके सब बराबर हैं, उनको ये नहीं मालूम था कि ISKCON में भी एक हायरार्की फॉलो की जाती है, मतलब जैसे शिष्य गुरु उनके गुरु। So people may be given the position of authority not necessarily on account of their spiritual advancement, but it may be on account of their managerial ability. They may be very expert in managing, but not necessarily expert in their spiritual practice. तो ISKCON में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इतना आध्यात्मिक उन्नत नहीं होता, बट कोई व्यक्ति जो होता है काफी अच्छा मैनेजर होता है, वो काफी अच्छी तरह से लोगों को मैनेज कर सकता है, तो उसको भी एक मैनेजरियल पोजीशन दे दी जाती है। Just like we look at the universe and we see there are demigods. There are demigods who serve under the direction of the Supreme Personality of Godhead. Someone's in charge of the sun, someone's in charge of the moon, there's the fire god, the wind god, like that. तो इस तरह हम देख सकते हैं, इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में भी अलग अलग देवी देवता हैं, कोई सूरज के देवता हैं, कोई चंद्रमा के देवता हैं, कोई अग्नि के देवता हैं, कोई जल के, कोई वायु के, और ये सब कैसे कार्य करते हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के उसमें कार्य करते हैं। So these demigods are doing wonderful service on behalf of the Lord, but at the same time they're not pure devotees. They do have material desires. तो ये देवी देवता जो हैं, ये अच्छी तरह सेवा कर रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए, बट ये जो हैं ये शुद्ध भक्त नहीं होते, इनकी भी काफी सारी भौतिक इच्छाएं होती हैं। We don't want to offend them, but at the same time we do offer our respects to the demigods, but at the same time we understand they're not fully pure devotees. तो हम देवी देवताओं का अपमान नहीं करते, हम उनको पूरा आदर देते हैं और हम जानते हैं कि वो शुद्ध भक्त नहीं। So sometimes also it happens within our ISKCON society, someone may be a big manager in our movement, but he may not be very spiritual. He may not be so realized in his spiritual practice. तो हमारे ISKCON समाज में भी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़े पद पर है, बट जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक भी उतना उन्नत हो। At the same time, we have to respect that he's doing a wonderful service on behalf of the Krishna consciousness movement. पर इसमें हमें ये समझना चाहिए कि हमें उसको आदर देना पड़ेगा, हमें उसको पूरा आदर देना चाहिए, क्योंकि वो ISKCON समाज के लिए बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है। And so we have to be guided, we have to work under the authority, we work within the authority system. There are senior managers, there are senior people, and we accept we accept them and recognize them as being authorities and work under their instructions. तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि कई ISKCON में जो हो सकते हैं ऊंचे पद पे व्यक्ति हो सकते हैं, सीनियर ऊंचे बड़े मैनेजर हो सकते हैं, हमें उनको पूरा आदर देना पड़ेगा और हमें उनके साथ कार्य करना पड़ेगा। Srila Prabhupada organized like that. He set up this system. He elected some people to be the governing board commissioners and put them in charge of different temples. तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारा सिस्टम बनाया है, उन्होंने GBC का निर्माण किया और अलग-अलग GBCs को अलग-अलग मंदिरों की जिम्मेदारी सौंपी। And he wants us to work under this system, to cooperate with the system. और श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम आपस में मिलजुल कर सहयोग के साथ इस सिस्टम को फॉलो करें। Prabhupada understood, when you have a big society like ISKCON with many people, we have to be very organized. So Srila Prabhupada was very much concerned that we would organize nicely. तो श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कि आगे ISKCON में जाके बहुत सारे भक्त जुड़ेंगे और ये जो समाज है ISKCON समाज बहुत फैलेगा, तो वो इसलिए हमें ये सारे का सारा सिस्टम देके गए
कि हम आपस में सहयोग कर सकें. So everything is like that in ISKCON. We want you to understand there's a lot of organization, there's a lot of thinking, a lot of devotees putting their energy into making arrangements to maintain the standards and to keep everything nice, to preserve Srila Prabhupada's teachings and the message of Lord Chaitanya. तो हमें ये समझना चाहिए कि ISKCON समाज में, इस संस्था में जो हैं काफी सारे भक्त हैं, अलग अलग जो बड़े बड़े पदों पे हैं, और वो सब इसलिए काम कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने ये जो संस्था बनाई है ये ठीक तरह से चल सके और ISKCON की शिक्षाएं हर जगह पर फैल सकें. So I just wanted to give that little message to you tonight. I hope it was of interest to you. And if there's any question, now is a good time to ask. तो महाराज जी कह रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको इसी बारे में, ISKCON के बारे में आज बताना चाहता था. अगर आप लोगों का अभी कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो आप सब पूछ सकते हैं. Hare Krishna Maharaj, thank you for the nice things to explain about the ISKCON and ISKCON initiative. So Maharaj, there is a question from chat box. How to understand that we are ready to preach as our behavior is still not? How to understand it? We're ready to what? How to understand that we are ready to preach as our behavior is still not as purified as per the qualities as the scriptural injunction. Yes, we should behave properly to preach. That it's not just preaching, but we have to also behave. There's achar and prachar. So the achar, the behavior must be good, and then the preaching will be more effective. Yes. तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पे प्रश्न था कि अगर हमारा अपना आचार ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या हमें प्रचार करना चाहिए. तो महाराज जी ने कहा कि अगर हम अपने प्रचार को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें अपना व्यवहार और आचार पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रचार जो है ज्यादा प्रभावशाली रहेगा. Sri Chaitanya Mahaprabhu often quoted the verse Bharata Bhumiti Haila Manushya Janmaja Janma Sartaka Karikara Para Upakar. So Mahaprabhu is saying that to take birth in Bharatvarsh is very good blessing, is very fortunate. You should become perfect and then you should make others also perfect. तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना बड़ा ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए. तो सबसे पहले आपको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और फिर इस तरह प्रचार करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए कि और लोगों का जीवन भी सार्थक हो. So if we are not Krishna conscious ourselves, how will we ever be able to make other people Krishna conscious? तो अगर हम खुद ही कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं तो हम कैसे अलग अलग लोगों को प्रचार कर पाएंगे कि वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएं, कृष्ण भावना भावित हो जाएं. Of course the answer is that, well, we give Prabhupada. We don't give ourselves, we're giving Srila Prabhupada. When we go for preaching, we want to present Srila Prabhupada. We present Prabhupada's books and Prabhupada's teachings, which is coming through the parampara. तो ये ठीक है कि जब भी हम कहीं पे प्रचार करने जाते हैं तो हम अपने आप को नहीं बताते. वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे प्रभुपाद जी को वो करते हैं, प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं अपने, और हम प्रभुपाद जी की किताबें, प्रभुपाद जी की ग्रंथ, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, वो सब हम आगे उन सब का प्रचार करते हैं. Of course, everyone who is engaging in the missionary activities, they are expected to come to the minimum standard of 4 regulative principles and also try to chant at least 16 rounds. तो जो कोई भी प्रचार करता है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है
कि वो चार जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं इस्कॉन में, उनको जो है अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारे और कम से कम 16 माला का जप करे। If somebody is not strictly following the regulative principles but preaching, it will be criticized, it will be condemned by other people. It will be creating a very bad impression on others, that we're trying to influence people to spiritual life, but we're not following ourselves. तो अगर कोई खुद ही ठीक तरीके से उन 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा, उल्लंघन कर रहा है और वो प्रचार करने जाता है, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा और लोग कहेंगे कि ये कैसा प्रचार करता है जो कि खुद ही अपनी कही हुई बातों को अपने जीवन में नहीं उतारता और हमें कह रहा है। We say example will speak louder than words. We may speak so many words, give instructions, but if we don't show the right example ourselves, the words will not be effective. ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कोई उदाहरण कर देते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है इसके कि अगर हम एक लंबा प्रवचन दें। अगर हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि हमारा आचार, हमारा जो है, हमारे अपने उदाहरण से अगर ठीक रहेंगे तो फिर हमें लंबे लंबे प्रवचन देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। So generally it's recommended one should be strictly following 4 regulative principles, and then he can actually present Krishna consciousness to others. That's the empowerment, that's the authorization that you're faithful to the religious principles. तो इसलिए कहा जाता है कि कहा गया है कि हमें 4 नियमों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए और फिर हमें प्रचार करना चाहिए, तो हमें गुरु परंपरा से एक शक्ति प्राप्त होती है और हमारा प्रचार जो होता है प्रभावशाली होता है। And when we preach, we don't want to concoct or speculate or present any new philosophy. We should repeat what we have heard from the acharyas. तो जब भी हम प्रचार करते हैं तो उसमें हम कोई अपना मनोधर्म नहीं जोड़ते। हमने जो भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में या पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रील प्रभुपाद के माध्यम से सुना है, हम जाके उसको उसी तरह से रिपीट कर देते हैं, बता देते हैं। Everything we say should be authorized, it should be confirmed by the spiritual authorities. There are 3 spiritual authorities, sadhu, shastra and guru. तो हम जो भी बताते हैं, हम जो भी उदाहरण देते हैं, हम जो भी आध्यात्मिक जीवन के बारे में किसी को शिक्षा देते हैं, तो वो इन 3 चीजों से जो होती है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। हम इन्हीं से बताते हैं, हम इसके अलावा और कुछ नहीं बताते अपना मनोधर्म। When we say shastra, we mean especially the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. These books, these are shastra. And then Guru is Srila Prabhupada, the founder Acharya. And Sadhu, the Parampara, all the great Acharyas in the line of disciplic succession. तो शास्त्र का क्या मतलब है? शास्त्र का मतलब है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। गुरु यानी श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर, और उसके बाद साधु मीन्स हमारी गुरु परंपरा और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य। तो हम जो भी बताते हैं इन तीनों से बताते हैं और कुछ नहीं बताते। Okay, there's a couple of other hands up. Yes, Maharaj, another question. Yes, first of all, Borun Panto, can you ask question? I like to hear classes of Gopal Swami Maharaj, Putaka Maharaj. Now Your Holiness voice is also any of whoever I get such opportunity, I should get to primarily follow his Prabhupada and to take a life to follow your respect. So I mean, but equal to 0 into 1, take one initiative. So I think I'm not telling
really getting it about it to like 5,000 like this is a good way consciously optimize. Are you able to hear it all, Prabhu? No, actually, Varun Babu, your sound was not clear. We are not properly here. Okay, I'll bring in headphone for you. Meanwhile, you get another question. Okay, so by that time सुमित को क्वेश्चन पूछिए आप हिंदी में। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मतलब कि हम अपनी भक्ति को ज्यादा ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? सॉरी, कोई क्वेश्चन रिपीट कीजिए। नवनीत को इंग्लिश में। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी भक्ति को ज्यादा ज्यादा कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? हरे कृष्णा महाराज जी, he is saying Dandavat Pranam Maharaj ji, he is asking like how we increase our devotional life more and more. How we increase our devotional life more and more, simply by more and more chanting, by more and more sadhu sangha, by more and more temple programs, by more and more Harinam Sankirtan. तो हरे कृष्णा सुमित जी, महाराज जी कह रहे हैं कि आप अपनी जो है भक्ति को ज्यादा ज्यादा चैंटिंग से, साधु संग से, मंदिर के प्रोग्राम्स अटेंड करके, हरि नाम अटेंड करके, शास्त्र पढ़ के इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण सुमित जी। ओके प्रभु, ओके प्रभु। इस प्रभु आसपास मंदिर ना हो तो? हरे कृष्ण महाराज जी, he is asking if there is no temple nearby, then what will I do? Then you make your home a temple, you chant at home, you make an altar at home, and you can invite the neighbors, and you can have sometimes program, you preach to them. हरे कृष्णा सुमित जी, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में माला कर सकते हैं, अपने घर में ऑल्टर बना सकते हैं, अपने घर में छोटा प्रोग्राम रख सकते हैं और आसपास जो है अपने पड़ोसियों को बुला सकते हैं कीर्तन में और उस प्रोग्राम में। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Now I hope it's audible. Yes, very Yes. good now. Yes. So Maharaj ji, actually I listened to you, it feels really good. I listened to Gopal Krishna Maharaj and also God Govind Swami and Jai Pataka Swami Maharaj. So there are a lot of wonderful gurus in ISKCON. So I'm not able to zero into one to seek initiation, but like I'm from Delhi, so it's very usual to get initiation from Gopal Krishna Swami Maharaj. So I went to a temple today, and they are saying that if you are chanting this chant for 2 years, then you are eligible. So I can apply for the initiation. So is that a good consciousness, or should I change my attitude to something? Should I translate, Maharaj? First? नॉमिनेट को आप आंसर। ओके, सो ये प्रभु जी का क्वेश्चन है कि प्रभु जी जो है वो महाराज जी को भी सुनते हैं, वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी और हिज होलीनेस गोविंद स्वामी महाराज जी के लेक्चर सुनते हैं। और वो आज मंदिर में गए और उन्होंने पूछा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि 2 साल अगर आप 16 माला का जप कर रहे हैं तो फिर आप दीक्षा ले सकते हैं। तो प्रभु जी का क्वेश्चन है कि क्या चेतना होनी चाहिए मेरी दीक्षा लेने से पहले? So yeah, that's all right for your diksha, but you have to make sure that you have shikshas, because Gopal Krishna Maharaj has many disciples and he has a lot of responsibility. So he has a lot of work to do. He won't be able to give you a lot of time and a lot of attention personally. But if you have shiksha, if you have a connection to his senior men, then they can help you.
तो महाराज जी बता रहे हैं जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बहुत सारे वरिष्ठ शिष्य हैं, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उनका जो होता है जो उनके पास व्यक्तिगत समय नहीं होता कि वो हर एक अपने जो है शिष्य को मिल सके। परंतु अगर आप उनमें से उनके किसी भी वरिष्ठ शिष्य को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप उनसे मिल सकते हैं और फिर आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। मतलब दीक्षा गुरु महाराज जी से, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। So the important thing is that you get shiksha gurus, 2 or 3 at least, people who are there to help you regularly and to guide you. Okay. तो Yes, yes. प्रभु जी प्रभु जी आपके लिए ये जरूरी है कि आपके पास 2 या 3 जो हैं शिक्षा गुरु हों जिनसे आप जो है निरंतर जो है शिक्षाएं ले सके, क्योंकि आपको महाराज जी का व्यक्तिगत संग इतना आराम से नहीं मिल पाएगा। I understand, Maharaj. So there is one more guru from ISKCON, His Holiness Priya Swami Maharaj. He can give some personal attention. So he frequents to near my home. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि कोई और गुरु महाराज जी, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, जो कि हैं जो कि वहाँ वेद व्यास प्रिय महाराज, कोई हाँ जी वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज जो कि प्रभु जी के घर के आसपास ही आते हैं। Yes, yes. Yes, there are many gurus in ISKCON. There's many. It's not just 1, 2. There, I said there's, especially in India, around India, there's many. So you can choose for yourself. But the important thing is that you're getting regular shiksha. You have to get regular instruction. People who are really guiding you and watching you and helping you with the daily sadhana. तो महाराज जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ठीक है, इंडिया में तो बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है प्रभु जी के लिए कि उनके जीवन में शिक्षा गुरु होने चाहिए जो कि रोज उनको देख सकें कि वो कैसे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, उनको शिक्षाएं दे सकें, उनको गाइड कर सकें, उनको हेल्प कर सकें। यानी उनके जीवन में शिक्षा गुरु होने चाहिए जिनसे वो निरंतर और रोज शिक्षाएं ले सकें, क्योंकि महाराज जी के पास टाइम नहीं है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के पास। ओके महाराज जी, धन्यवाद। Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Rajat ko. Hare Krishna Maharaj. Yes, Prabhu. Maharaj, I have a question. We in daily life go to our office and associate with all people who are not really devotees, and we also have a lot of call time also during office. So at that time our bhakti goes down. Means our maybe it gets affected. My chanting gets affected if I maybe spending more time associating with them. But that my job demands. However, this puts me into turmoil. How to increase my bhakti? So how to balance it and how to go forward in bhakti? Please Maharaj, tell me your instructions. तो हरे कृष्णा, Well, प्रभु जी का क्वेश्चन है। Okay, go ahead, Prabhu. ओके, तो प्रभु जी, रजत प्रभु जी का क्वेश्चन है कि प्रभु जी दिल्ली में रहते हैं और उनको ऑफिस जाने के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, मतलब ऑफिस में जाना पड़ता है और वहाँ पे सभी भक्त नहीं होते। तो अगर प्रभु जी उनका संग करते हैं और प्रभु जी ने व्यक्तिगत रूप से महसूस भी किया अपने जीवन में कि अगर वो उन लोगों का संग करते हैं तो ये प्रभु जी के आध्यात्मिक जीवन, स्पेशली उदाहरण के तौर पे चैंटिंग को अफेक्ट करता है। तो प्रभु जी चाहते हैं कि मैं कैसे इस चीज से बाहर आ सकता हूँ। Yes, the important point is that you have to have a good sadhana. You know, before you go to office, your morning program, you have to really put energy there into that sadhana, what you're going to do before you go to office. Waking up early in the morning and chanting and trying to read or maybe even do worship like that. It's very important that we have a spiritual program to protect us, because you have to go into the office and you have to associate with people who are not devotees. So you have to protect yourself, and the protection comes
from your sadhana, daily sadhana? तो महाराज जी बता रहे हैं कि हमें जो है अपने आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए एक सुरक्षा चाहिए, और ये सुरक्षा कहाँ से आएगी? हमें सुरक्षा मिलेगी हमें अच्छी साधना से। तो हमें जैसे प्रभु जी को सुबह जाने से पहले जल्दी उठना, अच्छी तरह जप माला पे ध्यान पूर्वक जप करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, और प्रभु जी अपने घर में अगर ऑल्टर रख सके तो ऑल्टर में सेवा करें, भगवान की कुछ सेवा करें। तो ये सब कुछ जरूरी है प्रभु जी के आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि प्रभु जी को बाहर ऑफिस में जाके कर्मी लोगों का संग करना ही पड़ेगा। So morning programs very important, and also days when you're not working, take full advantage, try to go to temple and get good association. तो जो मॉर्निंग की साधना है, जो सुबह की साधना है, वो बहुत ही जरूरी है इस्कॉन में। और जब प्रभु जी अगर ऑफिस नहीं जाते जिस दिन, तो प्रभु जी को चाहिए कि वो अपने आसपास किसी मंदिर में जाएं और वहाँ पे पूरे का पूरा मॉर्निंग का सुबह का प्रोग्राम अटेंड करें। Yeah, it's difficult when you don't have devotee association, but most people are in that situation. Even devotees who go for book distribution, you know, they associate, they have to meet so many people who are not devotees. And so that's there for everyone. We have to learn how to live in this world and not to be affected by all the non-devotees. तो महाराज जी बता रहे हैं कि ये सभी के लिए ही है प्रभु जी। देखिए जो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथों का वितरण करने जाते हैं, उनके लिए भी ये समस्या आती है, क्योंकि वो भी बाहर जाते हैं और उनको भी कर्मी लोगों से मिलना पड़ता है। तो हमें तो ये सीखना पड़ेगा, ये हमें कला सीखनी पड़ेगी कि इस संसार में हम कैसे रह पाए उन लोगों के बीच में जो कि भक्त नहीं है। So try to get association, but at every opportunity, you know, you try to get association with the senior devotees. तो आपको चाहिए कि आपको जो भी मौका मिले, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ भक्तों का, जो आपसे आध्यात्मिक जीवन में वरिष्ठ हैं, उनका संग करें और अच्छी तरह से उनके संग का फायदा लें। And that association may also be reading Prabhupada's books regularly. और उन वरिष्ठ भक्तों का संग करने का एक तरीका ये भी है कि हम शिला प्रभुपाद की बुक्स, शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, उनका निरंतर रोज ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। Keep a book with you, always, wherever you go, keep a book with you. जहाँ भी आप जाएं, शिला प्रभुपाद की किताबों को कम से कम एक किताब को अपने साथ रखें। And you should have a program regularly to read regularly. और आपको जरूर उन किताबों को रोज नियमित रूप से जरूर उनका अध्ययन करें। Okay, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. महाराज पल्लवी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. We are very fortunate to have your association today. Prabhuji, like you said, Maharaj ji, like you said, कि हम लोगों को शिक्षा गुरु का ज्यादा एसोसिएशन मिलेगा। गुरु के पास तो जो शिष्य हैं, they have a large number of disciples. They cannot pay personal attention to us, but we should have a more and more association of the शिक्षा gurus. फिर प्रभु जी वहाँ पर महाराज जी, how should we understand then what will be the role of guru, like how we will get, purified with our anarthas if we will not have direct association of the guru under whom we have been initiated. So how we will relate to him then? Navneet, you can translate in English. First portion actually Mataji Hindi में बोला। एक्चुअली प्रभु जी मैं सुन नहीं पाया, माता जी एक्चुअली आवाज थोड़ा सा काम, तो कैन माता जी can you repeat in English, माता जी? Okay. Dandavat Pranam to Maharaj. We are very fortunate to have your association today, Maharaj ji. My question is like, if the initiating guru is having a large number of disciples,
And as you said that, because he cannot pay personal attention to each and every disciple, so we should have more and more association of the Shiksha Gurus in such case. But then back of the mind, a question arises, like on the daily basis or on a monthly or a weekly basis, we are already having, association of the senior disciples. But if we will not have personal attention or from our initiating guru, then how we will relate to him? Will we get purified in that case? I want to understand that thing, Prabhuji. हरे कृष्णा। तो माता जी का प्रश्न है कि अगर हम जैसे दीक्षा गुरु से दीक्षा लेते हैं और तब दीक्षा लेते हैं, बट हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके बहुत सारे शिष्य हैं और हमें उनका व्यक्तिगत संग नहीं मिलेगा, हमें व्यक्तिगत संग तो सिर्फ हमारे शिक्षा गुरु का ही मिलेगा, तो फिर हमारा जो प्यूरिफिकेशन है कैसे होगा दीक्षा लेने से, आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद? Well, you have to understand the duty of the Shiksha Guru is to encourage the faith of the devotee in their own Diksha Guru. So by... Go ahead, Prabhu. महाराज जी ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा गुरु होता है उनका क्या वो होता है, शिक्षा गुरु का जो मेन कार्य होता है यही होता है कि कैसे एक जो नया शिष्य है उसका ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा जो है अपने दीक्षा गुरु में बढ़ाई जाए. So the Shiksha Guru is not to replace the Diksha Guru, but is to help strengthen and to encourage the faith of the disciple. तो जो शिक्षा गुरु हैं वो दीक्षा गुरु को बदलने के लिए नहीं होते, तो शिक्षा गुरु का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा शिष्य का अपने दीक्षा गुरु और उनकी वाणी में और उनकी शिक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा उनकी शिष्य की श्रद्धा को बढ़ाए, ये कार्य है शिक्षा गुरु का. But it's like that, it's quite simple. It's not a competition. It's not that Shiksha Guru is coming to take disciples and take people away from their Guru. Rather, he's helping to strengthen their faith in their Guru. तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई आपस में मुकाबला नहीं होता, और शिक्षा गुरु ये नहीं चाहता कि दीक्षा गुरु के जो शिष्य हैं उनको अपने साथ मिला ले. उसका तो सिर्फ यही कार्य होता है कि कैसे शिष्य जो है अच्छी तरह से अपने दीक्षा गुरु की शिक्षाओं का पालन कर सके और उसका ज्यादा से ज्यादा अपने दीक्षा गुरु में श्रद्धा बढ़ सके. Okay, Mataji? Yeah? Yes, thank you, Maharaj ji, thank you. Okay, thank you for bringing up that point. It's an important point. Okay, I think there's no more questions. Oh, is there? One short question, Prabhuji, Maharaj ji. So how it happens, like current Guru will take us to Srila Prabhupada and Srila Prabhupada will take us to Krishna, or will the Guru will take us directly to Krishna? तो ये क्वेश्चन है कि कैसे हम जो है मतलब श्रीला प्रभुपाद जी हमें कृष्ण तक लेके जाएंगे या हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हमें कृष्ण तक लेके जाएंगे? Yeah, that depends on your faith. You know, do you have faith in your Guru directly, or do you want to go from your Guru, go to Srila Prabhupada? Generally, we do look on Srila Prabhupada, as I said, he's the instructing spiritual master for all the members of the society. He's the founder Acharya. So his position is very important. तो प्रभु जी एक्चुअली ये हमारे श्रद्धा पे है कि हम कैसे देखते हैं अपने दीक्षा गुरु को या शिला प्रभुपाद जी को, बट हम शिला प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उनको ही अपनाते हैं, तो हम शिला प्रभुपाद जी पर ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं, श्रद्धा बढ़ा सकते हैं. And the qualification of someone who's your spiritual master is that he's a very obedient follower of his spiritual master. His spiritual master should be Srila Prabhupada.
And so he has full faith and is completely devoted and surrendered to Srila Prabhupada. तो कोई भी एक जो दीक्षा गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उसका सबसे बड़ी योग्यता ये है कि वो अपने गुरु का बहुत अच्छा सेवक होता है, बहुत विश्वसनीय सेवक होता है। तो अगर हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो प्रभुपाद जी के बहुत अच्छे सेवक हैं, विश्वसनीय सेवक हैं, तो वो सारी की सारी उनकी शिक्षा, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं आपको देंगे। So he will bring you to Prabhupada. Prabhupada will take you back to Godhead. तो वो आपको प्रभुपाद जी के पास लेके जाएंगे और प्रभुपाद फिर आपको वापस कृष्ण के पास लेके जाएंगे। Right? When we offer food, when we offer on the altar, we offer to the Guru, Guru offers to his Guru, and ultimately it goes to Krishna. तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि जब हम ऑल्टर में भगवान को कुछ भोग चढ़ाते हैं तो पहले हम अपने गुरु को देते हैं, गुरु श्रील प्रभुपाद जी को देते हैं, वो उनके गुरु को देते हैं और इस माध्यम से वो कृष्ण के पास जाता है। Okay, so we will stop here tonight. Getting late for me. Yes. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Very nice. Krishna. We get your association, and we'll chant Hare Krishna Mahamantra to thanks Maharaj. Please chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Also,